अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वीडियो इंट्रोडक्शन टू मटेरियल केमिस्ट्री के बारे में है। पहले मैं आपको इस कोर्स की कुछ डिटेल्स दूंगा। कोर्स कोड है इसका CHM6810 और कोर्स टाइटल है इंट्रोडक्शन टू मटेरियल केमिस्ट्री। 3 क्रेडिट आवर्स का ये कोर्स है और इस कोर्स में हम मटेरियल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वेरी फर्स्ट हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन है मटेरियल्स का। देन हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फिर मटेरियल्स को हम क्लासिफाई करेंगे, इनकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम डिफरेंट मेथड्स मटेरियल प्रिपरेशन के डिस्कस करेंगे और प्रिपरेशन मेथड्स के साथ साथ हम करेक्टराइजेशन टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। डिफरेंट करेक्टराइजेशन टेक्निक्स फ्यू यहाँ पे मेंशन है, जैसे एक्सरे डाइफ्रैक्शन है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे है और इन करेक्टराइजेशन टेक्निक्स के हम इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मटेरियल करेक्टराइजेशन के लिए और इस टेक्निक को यूज़ करके किस तरीके से हमने बैंड गैप को कैलकुलेट करना है। इसके साथ कुछ रिकमेंडेड बुक्स की यहाँ पे लिस्ट है। ये चंद एक बुक्स हैं, मज़ीद बुक्स मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि बुक्स डाउनलोड करके मटेरियल में आपको साथ साथ प्रोवाइड करूँ। वेरी फर्स्ट स्लाइड है मटेरियल। व्हाट इज़ मटेरियल एंड इट्स एग्जांपल्स। तो आप सब फेमिलियर होंगे मैटर के साथ। आपको पता है कि जो भी चीज़ वज़न रखती है, जगह घेरती है, यानी जिस चीज़ की मैस है, वॉल्यूम है, हम उसको कंसीडर करते हैं कि दैट इज़ मैटर। तो मैटर की डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं। गैसियस स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है। इवन प्लाज्मा को भी मैटर की जो है एक स्टेट कंसीडर किया जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैटर और मटेरियल में क्या डिफरेंस है। तो मैटर जो भी यानी चीज़, जैसे मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि द थिंग विच हैज़ मैस एंड वॉल्यूम, उसको हम कहेंगे कि दैट इज़ मैटर। और जब किसी भी मैटर को हम किसी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो उस मैटर को हम मटेरियल कहेंगे। यहाँ पे जो डिफाइन इसको इस तरीके से किया गया है कि द सब्सटेंस आर सब्सटेंसेस ऑफ व्हिच अ थिंग इज मेड और कंपोज्ड। A stone is a durable material. Anything that serves as crude or raw matter to be used or developed. A wood pulp is the raw material from which paper is made. Material could be purely natural, for example, stone and wood. And the material could be synthetic or processed, for example, plastics and rubbers. तो स्टोन, वुड, ये सारी एग्जांपल्स हैं मैटर की। लेकिन स्टोन से जब हम कोई चीज़ बनाएंगे, इसको हम एज आ बिल्डिंग मटेरियल हम यूज़ करेंगे, तो उस वक्त हम ये कंसीडर करेंगे कि ये मटेरियल है। इसी तरह वुड जब रॉ फॉर्म में पड़ी हुई है तो दैट इज़ जस्ट मैटर। लेकिन वुड से जब हम प्रोसेस करके कोई चीज़ें बनाएंगे तो उस वक्त हम वुड को भी एज आ मटेरियल कंसीडर करेंगे और वुड से बनने वाले जो आर्टिकल्स हैं उनको भी हम कंसीडर करेंगे कि दीज आर द मटेरियल्स। Material science, the study of the properties of solid materials and how those properties are determined by a material's composition and structure. This field is an amalgam of solid state physics, metallurgy, and chemistry. Since the rich variety of materials' properties cannot be understood within the context of any single classical discipline.
Material chemistry is a new and highly interdisciplinary science that involves the use of material for the creation, characterization, and application of materials with interesting or potentially useful physical or chemical characteristics. Substances of interest include inorganic, organic, polymeric, and hybrid materials, and thus materials chemistry incorporates solid state chemistry, nanoscience, and polymer chemistry. Materials chemistry is central to the development of new technology and the global economy. तो मटेरियल केमिस्ट्री बेसिकली एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जिसमें हम केमिस्ट्री और इसके साथ जो एलाइड साइंसेस हैं जैसे फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, जियोलॉजी है, इनको कंबाइन करके हम स्टडी करते हैं। और ये जो कंबाइंड स्टडी होगी इसको हम ये कहेंगे कि दैट इज़ मटेरियल केमिस्ट्री। और किसी भी मैटर को जब हम यूज़फुल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो जैसे पहले मैंने आपको बताया कि वो मटेरियल है, और उस मटेरियल के एस्पेक्ट्स जब हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यानी उसकी हम कंपोजिशन देखेंगे, उसकी फंक्शनलाइजेशन देखेंगे, उसको हम फर्दर प्रोसेस करेंगे थ्रू केमिकल मेथड्स, तो ये सारे जो तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करेंगे ये मटेरियल केमिस्ट्री की डोमेन में आएंगे। With a basic understanding of the origins of properties, materials can be selected or designed for an enormous variety of applications, ranging from structural steels to computer microchips. Material science is therefore important to engineering activities such as electronics, aerospace, telecommunications, information processing, and energy conversion. ये मटेरियल साइंस की डिफरेंट जो है वो एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आयरन जो है वो रॉ फॉर्म में मौजूद है, इसको प्रोसेस करके हम कन्वर्ट करेंगे स्टील में। इसी तरह मटेरियल्स को प्रोसेस करके हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स वगैरह हम डेवलप करते हैं। यहाँ मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको मटेरियल्स की दूंगा, जैसे कि डायमंड ड्रिल bits are an excellent example of how an old material can be improved. Diamond is the hardest known substance and would make an excellent drill bit, except that it is expensive and has weak blends in its crystal structure. Because natural diamonds are single crystals, the planes extend throughout the material and they cleave easily. Such cleavage planes allow a diamond to produce beautiful gems, but they are a disaster for drilling through rock due to frequent breakages of drill pits. तो नेचुरल जो डायमंड है ये एज अ ड्रिल पिट यूज़ होता है, लेकिन ड्रिल पिट के तौर पे जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, यानी ड्रिल पिट जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती। अब इसकी जो लिमिटेशन है इसको ओवरकम किया गया है। द लिमिटेशन वाज ओवरकम बाय स्ट्रेटा पैक्स, अ सिंटर्ड डायमंड मटेरियल डेवलप्ड बाय द General Electric Company of the United States. This consists of synthetic diamond powder that is formed into a thin plate and bonded to tungsten carbide studs by sintering. Basically, sintering is the fusing by heating the material below the melting point. Because the diamond plate is polycrystalline, cleavage cannot propagate throughout the material. The result is a very hard bit that does not fail by cleavage when it is used to drill through rock to get oil and natural gas.
तो ड्रिल बिट्स जो हैं ये ड्रिलिंग के प्रोसेस में यूज़ होती हैं टू गेट ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। और नेचुरली जो डायमंड है उसकी जो ड्रिल बिट्स हम यूज़ करते हैं तो उसकी जो उसका मेकअप है उसकी वजह से होके उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम किया गया है और ओवरकम करते हुए जो सिंथेटिक डायमंड पाउडर है उसकी सिंटरिंग की जाती है टंगस्टन कार्बाइड के साथ। और जो रिजल्टेंट मटेरियल है उसकी मटेरियल स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू नेचुरल डायमंड। As we look back, synthetic materials have played a vital role in improving the standard of living and the quality of human life worldwide. Looking forward, materials chemistry will continue to be essential for solving the greatest challenges of our time, from sustainable energy storage and environmental challenges to the development of quantum devices and quantum communication technology. Materials chemistry is the section of material science and engineering that investigates the chemical nature of materials. This is a fast growing and highly interdisciplinary area with very flexible boundaries. The diverse nature of materials arises from their atomic composition and their complex molecular structures, which are organized over many different length scales. The resulting intricate micro and nanostructures led to striking physical properties such as electrical, optical, and mechanical properties, which are of both scientific and technological importance. तो बेसिकली मटेरियल केमिस्ट्री ये मटेरियल्स की कंपोजिशन के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं और ये हाईली इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। और इंटरडिसिप्लिनरी साइंस होने के साथ साथ हम इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को भी कंसीडर करते हैं। और रिजल्टेंट जो नैनो स्ट्रक्चर्स हम डेवलप करते हैं थ्रू द नॉलेज ऑफ मटेरियल केमिस्ट्री, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बल्क मटेरियल के मुकाबले में क्वाइट डिफरेंट होती हैं। Materials chemists are developing materials with controlled structure, properties, and function by combining novel synthesis and characterization techniques with computational modeling and artificial intelligence methods. Significant contributions have recently been made in energy storage and conversion, environmental remediation, imaging sensing, and electronics. A shared feature of research is the pursuit for molecular level understanding of structure property function correlations using experimental and computational techniques. तो मटेरियल केमिस्ट्री में ना सिर्फ हम केमिस्ट्री के नॉलेज को हम कंसीडर करते हैं, बल्कि मटेरियल्स को डेवलप करते हुए हम कंप्यूटेशनल मॉडलिंग एज वेल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी हम मदद लेते हैं। और इसके नतीजे में जो हम मटेरियल्स डेवलप करते हैं ये डेवलप मटेरियल्स हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देते हैं मटेरियल की कंपोजिशन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन के दरमियान जो को रिलेशनशिप है वो इससे बेटर जो है वो अंडरस्टैंड किया जा सकता है। इस पिक्चर में एक केमिस्ट जो है वो एक मटेरियल को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और नेक्स्ट जो स्लाइड है ये नैनो केमिस्ट्री के मतलब है, यानी मटेरियल फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मटेरियल को डिस्क्राइब किया, देन हमने मटेरियल केमिस्ट्री को कंसीडर किया और देन हम नैनो केमिस्ट्री को कंसीडर कर रहे हैं। नैनो केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एट द नैनो स्केल। 1 नैनोमीटर is equal to 10 raised to the power minus 9 meter.
This is a very small quantity. As a frame of reference, a piece of human hair is about 100,000 nanometers thick. Any material that is at least one dimension measuring from 1 to 100 nanometer can be considered a nanomaterial. नैनो मटेरियल कोई भी ऐसा मटेरियल हो सकता है जिसमें पार्टिकल का साइज़ किसी एक डायमेंशन में 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक हो, तो उसको हम नैनो मटेरियल कहेंगे या नैनो पार्टिकल कहेंगे। For instance, consider cutting a watermelon. When you slice the watermelon, two surfaces are generated from the first cut, leading to an increase of the total surface area. If the watermelon is cut continuously into nano-sized materials, that is nanomaterials, the total surface area would become huge. To give you an even better idea, the surface area of a tablespoon of nanomaterial is equivalent to that of a cricket stadium. तो नैनो मटेरियल बेसिकली हम बल्क मटेरियल से हासिल करते हैं, और बल्क मटेरियल को जब हम उसकी स्लाइसिंग करते हुए उसका पार्टिकल साइज डिक्रीज करते जाते हैं तो मटेरियल का जो सरफेस एरिया इन्हांस हो जाएगा। जैसे कि किसी नैनो मटेरियल का अगर हम एक टेबल स्पून लें तो उसका जो एरिया होगा एक टेबल स्पून नैनो मटेरियल का, दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ए क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। Nanoscience and nanotechnology are exactly what they sound like: science and technology at the nanoscale. These concepts were already widely used in our daily lives before more and more people of the general public be- began hearing about these two words over the past 2 decades. One commonly known example of nanotechnology is sunscreen. Its ability to protect us from cancer causing UV radiations is attributed to its major component nanoparticles. Zinc oxide and titanium oxide nanoparticles are used. The large surfaces of the nanoparticles help sunscreens effectively absorb the harmful UV radiations. Nanotechnology can also be used to develop eye drops capable of replacing glasses. तो नैनो मटेरियल्स जो हम सिंथेसाइज करते हैं उनको हम डिफरेंट एप्लीकेशंस की तरफ लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स सनस्क्रीन्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और नैनो मटेरियल्स को जब हम किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ लेके जाते हैं तो हम इस सब्जेक्ट एरिया को ये कह सकते हैं कि दिस इज़ नैनो साइंस आर नैनो टेक्नोलॉजी। एंड नैनो साइंस आर नैनो टेक्नोलॉजी involves the synthesis of nanomaterials, their characterization, and their application to a particular field that is called the nanoscience and nanotechnology. Dr. Richard Phillips Feynman was an American theoretical physicist and a Nobel laureate. Feynman's notion that there is plenty of room at the bottom has swung open the door to nanochemistry and has inspired scientists to relentlessly explore their field. At its core, chemistry with nanotechnology is all about doing more with less material. Therefore, nanochemistry is vital to the sustainable development of our economy and society. नैनो केमिस्ट्री या नैनो मटीरियल्स का जो फील्ड है बेसिकली ये
डॉक्टर फिनमैन जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी और उन्होंने ये कहा था कि देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। बॉटम से मुराद यानी पार्टिकल साइज़ को हम जितना डिक्रीज़ करते जाएं, जितना छोटा करते जाएं, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेरिएबल होती जाएंगी, उनमें वेरिएशन आती जाएगी। और जब हम इस सारे फील्ड को डेवलप करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, तो ये एक वास्ट एरिया ऑफ नॉलेज इससे डेवलप होता है। और नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो केमिस्ट्री जो है, दैट इज़ वाइटल फॉर द डेवलपमेंट in different sectors, and it contributes greatly to human society and economy. One example of importance of nanochemistry or nanomaterials is the first stand in my research regarding battery materials. Let me explain. The natural reserves for these materials keep decreasing due to the wide use of battery powered electronics. But the demand for batteries continues to increase while their prices are simultaneously expected to decrease. Nanotechnology plays and will continue to play a major role in combating the conventional wisdom of high demand leading to high price. A shift from costly lithium ion batteries towards less expensive sodium ion batteries. तो रिसेंट जो टाइम जा रहा है इसमें ड्राई बैटरीज का यूज़ बढ़ता जा रहा है। ड्राई बैटरीज को ऑटोमोबिल्स में, एरोप्लेन्स में और बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ किया जा रहा है। प्रीवियसली लिथियम मेटल को यूज़ किया जाता था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्राई बैटरीज, लेकिन लिथियम के रिसोर्सेज वर्ल्ड वाइड कम हैं और लेस रिसोर्सेज की वजह से हो कि लिथियम आयन कंटेनिंग जो बैटरीज हैं उनकी प्राइसेस हाई हैं। तो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने इसके अल्टरनेटिव ढूंढा है और अल्टरनेटिव सोडियम एक पोटेंशियल इसमें एलिमेंट है। और सोडियम कंपैरेटिवली अर्थ अबंडेंट एलिमेंट है और सोडियम आयन बेस्ड जो बैटरीज हैं उनकी एफिशिएंसी भी बेहतर है और उनकी प्राइस एज कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरीज जो है वो लेस है। Then the applications of nanochemistry or nanomaterials, the discovery of fullerenes in 1996, Nobel Prize for Chemistry to H.W. Kroto, R.E. Smalley and R.F. Curl. Discovery of graphene, 2010 Nobel Prize for Physics to A. Gem and K. Novoselov are important factors in the development of nanotechnology. तो आप इस एरिया की इम्पोर्टेंस आप देख लें कि 1996 का जो नोबेल प्राइज़ है केमिस्ट्री का वो नैनो मटीरियल्स पे दिया गया है। इसी तरह 2010 का जो फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ है वो भी नैनो मटीरियल्स की डेवलपमेंट पे दिया गया है। इसके साथ साथ जो 2023 का नोबेल प्राइज़ है ये नोबेल प्राइज़ भी नैनो मटीरियल्स की डेवलपमेंट पे दिया गया है और ये जो नोबेल प्राइज़ है ये उन साइंटिस्ट को दिया गया है जिन्होंने क्वांटम डॉट्स नैनो पार्टिकल्स डेवलप किए हैं। Then some more applications of nanochemistry are nano materials. Such materials range from everyday, for example, concrete, glass, aluminium, to those used in aerospace, microelectronics, and medicine. Materials chemistry impacts on a wide range of societal challenges, including communications and information technology, advanced manufacturing, materials efficiency, environment and climate change, healthcare, biotechnology, renewable and sustainable energy. तो मटेरियल जो केमिस्ट्री है इसकी वाइड एप्लीकेशंस हैं
और हेल्थ केयर से लेके टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तमाम जो शोबे हैं, इन्वायरमेंटल रेमिडिएशन है, और इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के जितने चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए नैनो मटेरियल्स यूज़ किए जा रहे हैं. And finally, the general public and policymakers should give their input regarding the commercialization and utilization of nanotechnology. Although कि कुछ नैनो जो मटेरियल्स हैं वो ऑलरेडी कमर्शियल हैं, उनको कमर्शियल स्केल पे यूज़ किया जा रहा है, लेकिन फर्दर इस एरिया में अभी तक रिसर्च कंटिन्यू है और डे बाय डे न्यू मटेरियल्स विद ग्रेटर एफिशिएंसी डेवलप किए जा रहे हैं. Future prospects in nanochemistry and nanomaterials के because nanomaterials can significantly improve the properties or functions of an object. We hope to see this technology used more going forward. But in order for more nanomaterials to be moved out of laboratories and put into the market, many parties have a role to play. इन पार्टीज़ में डेफिनेटली साइंटिफिक कम्युनिटी है. साइंटिफिक कम्युनिटी नैनो मटेरियल्स को सिंथेसाइज करेगी, उनकी करेक्टराइजेशन करेगी और उनकी एप्लीकेशन स्टडी करेगी. लेकिन ये मटेरियल्स उसी वक्त कमर्शियल होंगे जब इनके लिए गवर्नमेंट्स की जो एजेंसीज़ जो रूल्स रेगुलेशंस बनाने वाली हैं वो इनको रूल्स रेगुलेशंस बना के उन मटेरियल्स को पास करेंगे और फिर ये मटेरियल्स जो हैं ये कमर्शियल होंगे और मार्केट्स में अवेलेबल होंगे. First and foremost, it is the role of nanochemists to achieve facile and tailored synthesis of nanomaterials with desired functions at a low cost. इससे मुराद ये है कि जो डिमांड है मार्केट में, जैसे कि अभी मैंने आपको बैटरीज़ का बताया है, और अब रिसर्चर का ये काम है, नैनो केमिस्ट का ये काम है कि वो ऐसे मटेरियल सिंथेसाइज करे जिनकी बतौर बैटरी मटेरियल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो और साथ साथ उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो. Because nanoscience is an interdisciplinary field, scientists from various fields such as physics, biology, chemistry need to work together to achieve the goals. और जो नैनो मटीरियल्स की डेवलपमेंट है, दिस इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू केमिस्ट. इसमें जो डिफरेंट अदर नेचुरल साइंसेस के शोबा जाते हैं, फील्ड्स हैं, जैसे फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, इनके जो साइंटिस्ट हैं वो मिल के न्यू मटेरियल्स डेवलप करेंगे with potential applications. Thank you.